TPR. फिर हम Zoom पे कर रहे होंगे like you have seen. खैर, hi everyone, welcome to another episode of the TPR pod. This is the least prepared I have been for any episode क्योंकि initial हमारे guest किसी और को आना था, वो भाग गई. लेकिन what she did was she sent someone she has recommended बहुत ज़ोर से. तो सारा प्रेशर तुम पे है और खिजरा पे. अगर इन दिस ट्रिप हो सकता है खिजरा के साथ हो जाए पॉडकास्ट, तो हम इसके रिजल्ट्स वहाँ डिस्कस करेंगे, बट नो प्रेशर. दिस इज अ वेरी कैजुअल रिडिकुलस सिचुएशन. बिफोर वी कंटिन्यू, दिस इज द ए फॉर अलिफ स्टूडियो, माई फर्स्ट टाइम हियर. हो सकता है और भी पॉडकास्ट हो, तो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस, वेरी ह्यूज प्लेस. आप आएँ. उमेरदार इज़ द गाय हु रन्स इट. आप फॉलो अप करें इनसे, आप भी अपना पॉडकास्ट करें या म्यूजिक रिकॉर्डिंग. खैर, हसन हसन आपका नाम है, राइट? Literally the first time ever meeting you. Yes, absolutely. How are you doing? Good, great. Yeah. Thanks for inviting and happy to be part of this. I had no idea. अब मैंने फ़ोन रखा हुआ है ना इधर, तो अब ये बजेगा मचेगा सब कुछ अभी होगा. I had no idea about you personally, but खिजरा ने कहा था कि you work for Abhi. Abhi, absolutely. हाँ, उनका मैं नाम सुना था ट्विटर वगैरह पे ना, आता रहता है with पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में there have been a lot of fintech companies, और फिर बहुत से स्टार्टअप्स के हालात ऊपर नीचे भी हुए हैं. बिल्कुल. But I think Abhi is doing well. Yep, absolutely. हाँ. तो what do you do? Abhi में what is your job? What is Abhi? Sure. So Abhi is a financial wellness platform. It's actually Pakistan's first financial wellness platform. जहाँ पे हम जिस मकसद से आए थे वो ये था कि पाकिस्तान में कोई एम्प्लॉई, कोई वर्किंग इंडिविजुअल और ना ही कोई कंपनी स्ट्रगल करना चाहिए पैसों को लेकर. अच्छा. Right? So looking at the halat, we entered the market in 2021. We started with a product called Earned Wage Access. Earned Wage Access is a pretty known, phenomena worldwide. अमेरिका में 2012 में ये चीज़ इनिशिएट हो गई थी. पाकिस्तान में 2021 में हम लेके आए. We were the first one. What it does is basically lets you access your salary daily basis के ऊपर. अच्छा. Right? So imagine a time if I tell you कि जी 6 महीने में आपको एक दफ़ा सैलरी मिलेगी, आप 6 महीने के एक्सपेंसेस हैंडल करें. Gets pretty tricky. आप पहले 3 महीने में शायद पैसे उड़ा देंगे और फिर बाकी 3 महीने आप स्ट्रगल करेंगे. दोस्त से पैसे लेके कहेंगे 3 महीने निकले. सो सिमिलर सी सिचुएशन हो गई है इन्फ्लेशन के बाद. अच्छा. ठीक है, हमारे 30 दिन के गैप में अगर आप देखें, हम लोग 15 दिन तक अपनी सैलरीज एग्जॉस्ट कर देते हैं. एंड लुकिंग एट द ब्लू कॉलर समटाइम्स दे एग्जॉस्ट इन 10 days. प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी आदत ख़राब है. प्रॉब्लम ये कभी कभार अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, कोई चीज़ें आ जाती हैं, कोई इमरजेंसीज आ जाती हैं जहाँ पे उनको अपने पैसे वेस्ट या लगाने पड़ जाते हैं. राइट? नॉट वेस्ट एक्चुअली, उनको इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं, लगाने पड़ जाते हैं. सो अभी का मकसद ये था कि यार उसके बाद क्या करता है इंसान. उसके बाद ये करता है कि दोस्त के पास जाते कहते हैं यार 5,000 रुपये दे दे भाई, पहली तारीख को दे दूंगा. ठीक है, किसी दोस्त के पास, कज़न के पास, भाई के पास, अब्बा के पास. आई मीन मांगना पड़ता है. राइट? एंड द सोसाइटी वी लिव इन, मांगना इज अ वेरी शेमफुल एक्ट. वी डोंट वांट टू डू दैट एंड इट काइंड ऑफ ह्यूमिलिएट्स यू. श्योर. सेकेंड ऑप्शन लोन शार्क्स, जहाँ पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म लोन ले लें आप. ठीक है. थर्ड ऑप्शन आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है जिसकी एक्सेसिबिलिटी 220 मिलियन पाकिस्तानी के में से सिर्फ 1 मिलियन के पास है. राइट? सो लुकिंग एट पीपल डोंट वांट टू गो टू बैंक समटाइम्स एंड दीज ऑप्शंस, इट वाज वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्चुअली बी फाइनेंशियली स्ट्रांग. देयर वाज नो अदर वे. सो अभी ने कहा यार आपको आपकी सैलरी से ही सपोर्ट कर देते हैं. सो लेट्स से मैं एक आम बंदा हूँ जो एक जॉब करता है, वहाँ पे मैं 30,000 रुपये की जॉब करता हूँ. हर दिन मैं अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये कमा रहा हूँ. बट माई एम्प्लॉयर इज़ एक्चुअली डिसमिनेटिंग इट आफ्टर आई वर्क फॉर 30 days. मैं उसको कट करता हूँ. अभी आता है बीच में कहता है यार हर दिन की कमाई हुई तनख्वाह ऐप में शो होती रहेगी, उसमें से जितने पैसे आपने निकालने हैं विद इन 30 seconds इन योर वॉलेट और बैंक अकाउंट. Basically solving a cash flow problem. Exactly. Right? So some people call it advance salary, some people call it loan, but अगर देखा जाए इसको तो it's basically your right which you have earned. आप कमा लेते हैं तो फिर वो पैसे आपके पास उसकी एक्सेस आती है. तो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं? दे पे यू.
they pay us when they run the payroll of the employee. वो उसमें से deductions कर लेते हैं जो कि उन्होंने withdraw किया होता है like in the month, और बाकी वो पैसे हमें दे देते हैं, right? And what we charge is basically 100 rupees flat per transaction. So whenever you're transacting, you just have to, I mean, make sure that you're not transacting out of fun, because वो 10 There is a transactions cost. कर देगा, right? हाँ. You know, we wanted to put a negative point or aspect कि यार आपने भरपूर transactions नहीं करनी, तो 100 रुपए per transaction. And second is basically we have to sustain as well. Sure, So of course. so for that we had to put a cost, and I think this was the minimum amount of cost we could have incurred. How long has Abhi been around? So Abhi started in so I was the 5th member of the team, right? Sahi. And Abhi started in 2021. I joined in May. मैंने 3 महीने बाद किया था, तो अप्रैल में अभी स्टार्ट हुआ था, जून में मैंने ज्वाइन किया है, जुलाई में हमारा फर्स्ट क्लाइंट लॉन्च हुआ था, और as we speak today we have 350 plus clients on board. Wow. And that includes the 5 big textile exporters, top 10 exporters, textile exporters आपके, they're on board as well. So that includes Gul Ahmed, Artistic, Masood Textiles, Surti. What is the appeal for companies to sign up with you? So देखिए ना, आप as a company अपने employees को benefits देना चाहते हैं so that they get retained with you, and then obviously they're happy and more productive. But पाकिस्तान में 90% और 95% companies मेरा ख्याल है सिर्फ एक बेनिफिट देती हैं, जो कि है हेल्थ बेनिफिट, राइट? विच इज़ इफ़ यू लुक एट द डेटा हार्डली यूज्ड बाय एनी इंडिविजुअल, और ना ही ज़रूरत पड़े उसको, राइट? एडमिट होता है तो फिर वो कार्ड एक्टिव होता है, राइट? बट एक डेली प्रॉब्लम जो फाइनेंस रिलेटेड होता है इंसान को, पैसे की शॉर्टेज, वो कोई नहीं पूरा करता, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट फाइनेंशियल बेनिफिट दैट यू कैन ऑफर टू योर एम्प्लॉइज, and they will actually use it. And we have data backing that कि आपके पास कितने employees, कितने percentage of employees actually use it, right? Or these big companies, and it's completely free for the companies, right? You don't have to pay anything upfront. आपने subscription नहीं देनी, आपने upfront कुछ पैसे नहीं देने. All you have to do is support us with data so that हम उनको active कर दें जो आपके employees हैं. Once they're active, it's on use is what they're getting charged. Sahi. So it's the first financial wellness benefit that you can offer to any employee that's working for you, and it's actually a benefit that they will end up using. So you know, कहते हैं ना, a friend in need is a friend indeed, is where Abhi comes in for you. Is that your marketing? One of your marketing? Yeah, one of the marketing. अच्छा, तो the functionality क्या होती है कि like I'm somebody who signed up, my company signed up, मेरी payroll वैसे बैंक से आएगी या total everything gets transferred to you guys? ओके, सो देखें, नॉर्मली आपका पेरोल जो चलता है जिस तरीके से, ठीक है, वो वैसे ही चलेगा, ठीक है? हसन ने 10,000 रुपये निकाल लिए थे महीने में, माई HR प्रोसेसिंग द पेरोल, वो पेरोल वहीं से प्रोसेस होगा, हसन के पैसों में से 10,100 रुपये माइनस करके पेरोल चलेगा, और 10,100 का चेक अभी के पास चला जाएगा. सही. तो बेसिकली यू गाइज आर स्पेसिफिकली मैनेजिंग दिस salary advance, salary apportionment thing only. Exactly. So that's what we started with, right? Right. No, but this thing initially. So just for my understanding, if मैं कुछ ना करूँ withdraw अभी से, तो मेरी सैलरी किसी बैंक में आती है, वो उसी में आती है, वो वहीं आएगी और उतनी आएगी जितनी आती थी. There's no reduction at all. Right. तो it's not कि पूरी सैलरी has been shifted to Abhi. Nope. It's only this. It's actually जो इंसान पैसे निकालेगा उसके पैसे आपने वापस करने हैं. Basically to kind of, देखें पाकिस्तान में you know हालात ऐसे हैं कि आप क्रेडिट किसी को ऑफर करते हैं, देयर इज नो क्रेडिट स्कोरिंग, देयर इज नो यू नो चेक एंड बैलेंस, तो बंदे को पैसे लेके भागने में देर नहीं लगी. वी हैड टू इंश्योर कि हमें रीपेमेंट हो रही हो, एंड दैट इज गोना हैपन विद द एम्प्लॉयर्स. सो हुएवर इज एक्चुअली टेकिंग दिस सर्विस इज एक्चुअली इंश्योरिंग कि जी उसके पैसे आपको अभी को रीपे करने में कंपनी मदद करेगी, राइट? सो द कंपनी डजंट हैव टू डील विद समबडी asking for an advance or ये exactly वो सारा प्रोसेस हो, जो 3 दिन वो उसको रीजन बताने हैं, उसको कंपनी के पास जाकर मिन्नतें करनी है, बॉस को मनाना है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. नाउ दे आर एम्पावर्ड. अच्छा, कंपनी को कैश फ्लो की भी टेंशन नहीं है. एग्जैक्टली, ये पैसा बेसिकली अभी का जा रहा होता है. सही. तो बेसिकली यू गाइज आर डिपेंडिंग ऑन पीपल फॉर दिस वन प्रोडक्ट के लोगों को सैलरी से पहले पैसों की ज़रूरत होगी और फिर दे विल यूज योर सर्विस और उसकी फीस. तो व्हाट इज दिस अक्रॉस फाइनेंशियल like strata, yeah? Is it like a
high earning people भी हैं इसमें? Is it more blue collar? What's the ठीक demographic? है. Okay. सो अगर आप देखें यहाँ पर पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज ब्लू कॉलर. ठीक है. सो और इन्हीं को ज़रूरत पड़ती है पैसों की. Right. ठीक है. क्योंकि आप अभी इन्फ्लेशन देखें एक Yeah. साल में Yeah. मतलब मुझे अफेक्ट आया है आराम से. मतलब एक डबल रोटी आप लेने जाते थे 45 रुपए की, Yeah. आपके सामने सामने वो 90 रुपए की हो गई है. Hmm. डबल. आई थिंक बिस्किट का रोल मैं देख रहा था 20 रुपए से 40 रुपए. Yeah. सो आई मीन आई थिंक वी हैव सीन द बिगेस्ट इन्फ्लेशन हिट which Pakistan could have taken in Yeah. just 1 year जो Yeah. 20-20 सालों में नहीं होती थी. Yeah. ठीक है. Yeah. So looking at that, लोगों की सैलरीज इस तरह डबल नहीं हुई हैं. सही. राइट. Yeah. और ज़रूरतें वहीं की वहीं हैं. बच्चे ने दूध पीना है तो वो पीना है भाई. डबल रोटी खानी है तो वो खानी है. अब उसको employers, yes, there some employers are adjusting salaries, but a lot of are not. नहीं हाँ, it's minimal. तो उसमें हाँ. अब किसी ने कवर करना है तो थोड़ा सा सपोर्ट अगली सैलरी से तो ले सकता है. जिंदा तो रहेगा ना. कोई इवेंट आ रहा है, कुछ बच्चा किसी के घर में पैदा हो गया, अब उसके लिए क्या करेगा वो. राइट. सो स्टफ लाइक दैट. कोई बर्थडे आ रही है, कोई सेलिब्रेशन है, पीपल वर कटिंग ऑफ देयर लिटरली डेली वाले एक्सपेंस या डेली की ज़रूरियात बिकॉज दे वर रनिंग शॉर्ट ऑन मनी. दिस इज वेयर अभी कम्स इन एज अ हेल्पिंग हैंड. और हमारा अगर आप डेटा देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन 60 to 65% इज ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज दैट कम्स अंडर 50,000 एंड बिलो. राइट. उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको 10 लाख तक का भी बंदा, CEOs तक भी हमारे पास ऑब्वियसली ऑन बोर्ड है. दे कैन टेक मिलियंस आउट ऑफ व्हाटएवर दे हैव अगर वो चाहें. एग्जैक्टली. सो दिस प्रोडक्ट अगेन पीपल थिंक ऑफ इट यार ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग एक्सेस कर लेंगे. बट अगर आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है एंड पीपल आर एक्चुअली यूजिंग इट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन इमरजेंसीज. ठीक है. अब आप देखें, आपको पता है कि गोल्ड के पैसे बढ़ने हैं, आपको पता है कि आपके घर में ग्रोसरी जो आपने लेनी है उसके पैसे बढ़ने हैं. सो यू कैन एक्चुअली, इफ यू डोंट हैव मनी, यू कैन जस्ट विदड्रॉ समथिंग. आपका दोस्त फ़ोन बेच रहा है जो आपने अपग्रेड करना ही था, बट ही सेइंग कि जी मुझे आज या कल में ही बेचना है और आपके पास पैसे नहीं है. You don't have to worry about it anymore. Right. आपके बच्चे की बर्थडे आ रही है 24 तारीख को ही आती है. ठीक है. और वो जो है आपने सेलिब्रेट करने का आपने 1 तारीख को ही करेंगे तो वो नाउ यू डोंट हैव टू डू दैट. एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, कहीं गिफ्ट देना था अच्छा वाला वो आप दे दें. हाँ मतलब वो आई सपोज इवन फ्रॉम अ यूज पर्सपेक्टिव वो मजबूरी वाला एस्पेक्ट हाँ एग्जैक्टली हटा दें. तो जो उसके अलावा भी इस वजह से वाइट कॉलर एम्प्लॉइज एंजॉय दिस प्रोडक्ट एज वेल. राइट. So, I mean, I have been using Abhi myself in a situation. I'm going to give you a small example. जहाँ पे मैंने एक अपना बैंक का कार्ड दिया, उसके अंदर पैसे थे और वो चल ही नहीं रहा. Awkward situation me when my wife sitting and like guy saying नहीं है, चल ही नहीं रहा sir. And the other bank card I have is completely empty. तो मैंने अभी से उसमें सैलरी से पैसे डाले. I gave the other card. सही. You know, so it's an easy situation. So it's basically one more account that I'm actually making money out of is my job. वो मेरे पास accessibility मिल गई उसकी, बस that's it. Because बैंक के कार्ड भी अक्सर नहीं चल रहे होते. Exactly. हाँ तो it's and also if you don't use it तो कोई आपको चार्ज भी नहीं पड़ रहा. So is it 100 for everybody regardless of your salary? Yep. That's a flat fee for everybody. Exactly. 100 rupees. अच्छा. तो it is एक हद तक you guys are sort of for the business for Abhi. It needs to be like a large customer base, like as large as possible. Yep, exactly. क्योंकि कितने 100 रुपए के ट्रांजैक्शन होंगे एक महीने में, कितने लोग चाहिए होंगे to run a whole company. Exactly. हाँ. So देखिए हमारी टीम भी काफ़ी lean है ना. We haven't expanded, right? So we're not operationally heavy. So our team is actually almost 100 people, right? दूसरा अगर आप देखें, so we expanded, right? Upon looking at the market, हमने देखा कि यार this is not the only product people need. Employees को तो हम empower कर रहे हैं, businesses को empower कैसे करें? And that's where we come with the 3 different products now that we have in our portfolio. That's payroll financing, payroll processing, जिसको हम payroll solutions की umbrella में डालते हैं. अच्छा. Payroll financing, why did that come up? Because a lot of people were withdrawing their salaries through EWA product because उनकी salaries late हो रही थी या late हो गई. ठीक है. So उन्होंने कहा जी मेरी सैलरी लेट हो रही है, 10 तारीख को आएगी तो मैं निकाल लूँगी. सही. Now this is where the problem we could see. We were like, यार why don't we just create a financing product? Simple. वो प्रोडक्ट कंपनी के लिए, कंपनी एम्पावर हो रही है, राइट. मोरल डाउन होता है, एम्प्लॉइज कहते हैं जी अब दूसरी जॉब ढूंढना शुरू करो क्योंकि ये तो हर महीने लेट करते हैं. यू डोंट हैव टू डू दैट एनीमोर. अब आप सिंपली ये करेंगे जी आप अभी से फाइनेंसिंग लें पेरोल की, अपना पेरोल जो भी आपका चलाना है आप चलाएं विद इन 30 days 20 days 10 days जो भी आपने उसमें डिसाइड करना है आप उसको पे ऑफ कर दें वापस.
So this basically maintains the cash flow for your payroll ताकि आपके employees remain happy. एंड दूसरा आपने मेरे साथ तो ये मेरे ख्याल है मेरे पास 4 बैंक अकाउंट्स हो गए इस चक्कर में क्योंकि हर नई जॉब पे जाओ तो वो कहता है जी मेरा बैंक अकाउंट जो है ना कंपनी का वो इस बैंक में है तो आप जाके इस बैंक में अकाउंट खोलें राइट. मेरे पास हर तकरीबन बैंक अकाउंट खुला हुआ है इस चक्कर में क्योंकि वो पेरोल इस तरह चलता है इस वक्त हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट कि वो एक एक्सेल शीट के ऊपर सबकी सैलरी देखते हैं बैंक को देते हैं बैंक जो है वो उसको प्रोसेस कर देता है राइट. सो उसको आसान करने के लिए क्योंकि अब वो मेरा ख्याल है दौर रहा नहीं है जहाँ पे आप एक ही बैंक अकाउंट पे फिक्स रहें सबके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं. सो वी केम अप विद द पेरोल प्रोसेसिंग. उसमें करना आपने सिंपल ये है कि आपके एम्प्लॉयज़ के जिस भी बैंक में या जिस भी वॉलेट में अकाउंट खुला हुआ है आपको उनका डेटा लेके पोर्टल पे अपलोड करना है. इट्स अ वेब पोर्टल. वहाँ पे आप उसकी सैलरी अमाउंट जो है वो डिसाइड कर लें. जितना टोटल अमाउंट है वो अभी को डिपॉजिट कराएं वहाँ पे आपके अकाउंट में बैलेंस हो जाएगा एंड देन रन द पेरोल. So you don't have to go through the necessary step of getting a blue collar employee to open a bank account in X वाली branch जहाँ पे वो बेचारा स्ट्रगल कर करके कहता है यार करना ही नहीं है. So make it easy, right? Easy पैसा का वॉलेट भी खोला हुआ है तो उसका वॉलेट खोल के उस पर अपलोड करो. Get him the salary. People get salaries easy पैसा में भी. Yeah. अच्छा. Yeah. क्योंकि one of the things that I was thinking of जो कि I didn't speak to anybody लेकिन काफ़ी जिक्र होता है. I think the topic came, we did an episode on Twitter पे ना अक्सर people are doing charity work. They're collecting funds. अब ये बंदा है कोई. A lot of people have been doing it इतने अरसे से कि their efforts sort of expand to like larger scale, donations और वो. तो उसमें उनका मैं पूछ रहा था कि भाई आप क्या करते हैं. हम तो सब अपना पर्सनल बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अपेरेंटली पाकिस्तान में द बैंकिंग सिस्टम इज़ टेरेबल एंड इट्स रियली हार्ड एक तो फॉर पीपल हु आर एबल टू ओपन अकाउंट्स टू गेट एनीथिंग डन. बहुत सारा पेपर वर्क और रेड टेप वगैरह. But also a big part of the population is not included in that financial setup. सही. तो how does Abhi help? ये जो ब्लू कॉलर वाली बात जो तुमने की थी कि बंदा कहीं और जाके अकाउंट खुलवाए. बिल्कुल. How does this product solve that problem? So फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं. मेरा ख्याल है दिस टचेस दैट टॉपिक राइट. सो पाकिस्तान में अनबैंक्ड इज अ लॉट राइट. अब इसको बैंक कैसे करें राइट. सो कुछ कंपनीज कैश पे भी काम कर रही होती हैं राइट. लुकिंग एट द भाई अब एक काम वाला बंदा है वो कहता है मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं और मुझे खोलना भी नहीं है. मुझे आप 15,000 रुपये कैश दे दिया करें राइट. एंड देन समटाइम्स पीपल डू दैट. इस प्रॉब्लम के लिए इजी सोल्यूशन ये था कि हम इजी पैसा को ऑनबोर्ड कर लें. सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज़ ये जो हम पहले ऑफलाइन करते आए थे अब ऐप पे भी हो जाएगा. सो करते ये थे कि यार अगर कहीं पे रिक्वेस्ट आती है कि यार यहाँ पे बहुत सारे अनबैंक्ड हैं जिनके अकाउंट्स नहीं है. सो व्हाट वी डू इज़ वी टेक समवन विद अस गेट देम टू ओपन देयर अकाउंट्स एंड देन उनके अकाउंट्स ओपन होते हैं वो अभी की ऐप में बेसिकली एंटर हो जाते हैं. उसके अंदर उनकी सैलरी चली जाती है राइट. So this is how we fill that spot. Now we wanted to automate the process as well. So what we're doing right now with Easy Paisa is कि हमारी ऐप में ही sign up का option होगा. So you create your account right there. Once you create, because एक wallet का account खोलना is literally 3-step thing. So वहीं पे वो उसने account खोलना है अपनी email, I mean CNIC number वगैरह डाल के and then same account will be entered into the Abhi app directly. वहीं से वो अपनी salary access कर सकेगा. Right, so and then this goes to HR as well. HR now can transfer their salaries to the Easy Paisa. And now there's obviously wallets की एक अपनी limit होती है, receive करने की पैसे की. तो वो मतलब obviously within the limit उनकी salaries होती हैं तो they go for Easy Paisa. And in fact जो 2 लाख से ऊपर कमा रहा होता है उसके usually बैंक अकाउंट्स खुल ही जाते हैं. हाँ 2 लाख लिमिट है. Yeah, for wallets right now पाकिस्तान में yes EMIs की I think 2 लाख रुपए. अच्छा okay ठीक है. And so what has Abhi, I don't know if you can talk about Abhi's, how many people you guys are servicing? Oh yeah, so इस वक्त हमारे पास on the platform almost 2.25 लाख लोग active पड़े हुए हैं right. So we're serving them 300-ish companies में. Yeah, 380 plus companies में. Almost 400. Almost 400 right. So we code 350 plus. Sure. But it's almost 380 now. 400. हाँ 400 होने वाले इंशाल्लाह. So this and then अगर आप इनकी टोटल पाइपलाइंस देखें जो हमारी प्रोजेक्शन में है जो हमने इनसे ऑनबोर्ड करने हैं बिकॉज दे गिव यू सम ऑफ देम गिव यू डेटा इन एपिसोड्स राइट. सो जो टोटल पाइपलाइन ऑफ 750,000 यूजर्स वी हैव. So we just need to put effort and more resource and more time to just get this part of the funnel into this part of the funnel so that we spend more time activating and making them use the app. And
you said you keep your company like lean रखते हो staff Yeah. वगैरह को. There's a lot of discussion. अभी का अगर आप search करें news में, Hmm. पाकिस्तान में the startup news really seems to be focusing a lot on किसने कितने पैसे raise किए, Yep. in which round of funding Yep. ये वो. Uh, Again, we don't have to talk about this, but ऐसा Yeah. भी होता है कि आपकी कंपनी ने बहुत पैसे रेज किए, Yeah. फिर बहुत पैसे रेज किए, फिर बहुत पैसे रेज किए और बंद हो गई. बंद हो गई. तो you know, there's a lot of talk around companies that have very high valuations, Hmm. but शुरू से ही जिनका business model is not something that will sort itself out आगे जाके. ट्रांसपोर्ट सेक्टर वगैरह में दिखा इस तरह कि भाई ये तो होना ही नहीं था ना figure out. Uber is a huge global example, Yeah. which is still not profitable. Can you talk about that at this stage? Abhi ki profitability, path to profitability, Yeah. sustainability. I mean, profitability के ऊपर I don't know. So I'll tell you. I mean, again, it's a tough time for the country Oh, वो तो and है, for the हाँ. other startups as well. Yeah, And yeah. Abhi wants to support every other business out there. So we feel bad when this, you know, this ecosystem or this startup space gets hit. So we try not to comment in terms of क्या उनका नहीं, business उनकी model, तो but खैर है, yeah, हाँ. whatever. Just But about for yourself. Abhi, I mean, we're profitable, right? Oh, really? Yeah. So the third product that I was gonna tell you about हाँ. is invoice factoring, right? Right, I saw. जहाँ पे हाँ. we help businesses further. So SMEs die. Let's say example of that in this situation जहाँ पे आपकी payments delay होती हैं, आपका पूरा business की जो payments हैं वो delay होती हैं. Business payments delay होती हैं. Now imagine one big company stops a small client's payment. That person has Yeah. to pay 30 Salaries, different, and then the yeah. whole chain हाँ. is gonna get disrupted, Yeah, right? yeah. इसको हमने फिक्स कैसे करना है. हम यहाँ पे इंटरवीन करते हैं. हम कहते हैं यार आपने 90 days में पे करना था, हम आपको अभी पे कर देते हैं. we'll have obviously a percentage that we will charge, Sure. and then उसकी basis के ऊपर you keep your business running. हाँ. So we basically extend this credit against this invoice. We vet the SME, we vet the business that's going to be paying it off. उसकी basis के ऊपर we But kind that's a lot give of them- risk for you guys to be taking on. Yeah, so we do our risk analysis. Obviously, इसके ऊपर दोनों sides का risk analysis होता है, and if we feel comfortable कि यार यहाँ पे हम लोग extend कर सकते हैं, because पैसे लेना तो मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रूरत तो सबको है, right? So we have to see where we will create the Right. most value out of Right. for that business, for the other business, and for us as well. हाँ. So that's where we kind of invest. ऐसा तो नहीं होता कि फिर तुम लोग बंदे भेज रहे हो कि हाँ भी पैसे निकालो. नहीं, so देखिए ना काफ़ी strategic तरीके से ये डील हो रही होती है, राइट? इट्स नॉट लाइक we're giving out माइक्रो लोन्स. ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपने माइक्रो लोन्स एक्सटेंड किया और उसके बाद बहुत सी न्यूज़ आई हैं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ हो रही है जो आप बता रहे हैं. Unethical again, but we're NBFC, so we're licensed, we're audited by SECP itself, so it's not an easy thing to have. So yeah, I mean, this is pretty much sorted for us. And I suppose इसमें, I don't know, I'm making assumptions, but इसमें I suppose your margins are probably good enough कि वो जो more ground level products हैं, they sort of get subsidized and the whole company is able to function. Exactly. So देखें, it's an ecosystem, right, that supports the whole company. So इसमें ticket size बड़ा हो जाता है, right? Yeah. EWA में probably एक बंदे ने मतलब एक invoice 10 लाख की हो सकती है, salary 10 लाख की नहीं हो सकती, right? So that's where we come with obviously generating more revenue out of this sector. Invoice factoring gives us the most amount of revenue. और एक और भी एक चीज़ हमने ऐड की अभी recently ही की है, अभी पे के नाम से, right? Now that product does is when you are paid, let's say आपका एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पे आपको जब एक कस्टमर ऑनलाइन पे करता है कार्ड के थ्रू, तो वो पैसे बैंक के पास जाते हैं, बैंक 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में सेटल करता है, राइट? नाउ दिस इज अगेन अ डिले इन पेमेंट. सो अभी कम्स इन, अभी अपना एक पेमेंट गेटवे देता है अभी पे के नाम से. उस पेमेंट गेटवे का बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आपका एक नॉर्मल गेटवे चलता है. आपका कस्टमर ऑनलाइन जाके पे करेगा इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. So now you don't have to wait for 2 days. Just like small merchants का भी Exactly. So there's, again, छोटे business. So if you look at this whole picture that I just painted right now with products, it's a complete solution for companies and individuals working in the company so that they don't get, lost, let's say, in the cause of where they are short with money, close it down, etc. So इस economy में अगर आप देखें, so that's where we actually come into play, right? Inflation ज़्यादा हो रहा है, लोगों को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है. इसी वक्त basically अभी is here to help, right? So this is what we want to do and this is what we're doing.
What I'm thinking is कि तुम लोगों को रिस्क पड़ा क्या है कि अगर पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाए, which is a good position to be in, I suppose. Yeah, नहीं, so yeah, we want that to happen because Sure. देखें दोनों सिचुएशन में ना पैसों की जरूरत पड़ती है. हाँ. हालात बेहतर हो तो आपने एक्सपैंड करने के लिए चाहिए और Right. अगर हालात डाउन होते हैं तो सर्वाइव करने के लिए Right, चाहिए, right? right, And right, this is where we're here basically. So you guys are sort of already like you're providing a lot of banking services. है ना, मतलब advances, factoring, इस तरह की चीजें. Is there a roadmap where you guys just become an e-bank? अच्छा, so इस तरीके का अभी तक तो कोई प्लान नहीं है. And Right. again, when you say banking services, I'd rather term it as financial services. Sure, right? sure. So unfortunately, again, we don't have a lot of fintechs. ठीक है? That's why we always think of money with bank. Sure. Yeah, similar for me when I was joining Abhi. So मुझे लगा था यार बैंक वाला काम है, right? But then again, this is where the fintechs come in. जो काम आपके बड़ी organizations, even आप देखें दूसरे spaces में, बड़ी organizations एक काम कर रही होती हैं. Startup क्या करता है आगे? Startup becomes that small kid who starts running rather than walking. ठीक है? So हमने वही किया. हमने उसी process जो delay होता है या lengthy processes हैं, जहाँ पे gaps हैं, जहाँ पे कोई इस वक्त serve नहीं कर रहा, this is where we come in and plug in. No, that's fine. Yeah. But like, you know, कितना डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए कि तुम कहो कि यार आप जो है ना ये इन लोगों की सैलरीज जो आप बैंक में देते हैं काट के आप हमें ही देते हैं. I mean, that's, yeah, so that requires again licenses, right? It's not something that you actually, end up But you know ये इतने सारे लोग तुम्हारे साथ पहले से registered हैं, you know, they're taking what could be termed as an advance on their salaries that could आगे जाके loans भी हो सकते हैं. फिर आप उनको आपके records और financial credit history तो एक तरीके से है ना उनकी तुम्हारे पास, तो वो car loan भी बन जाएगा, वो mortgage भी बन जाएगा. I mean, maybe that's not a plan. Yeah. Maybe so I mean, it's the possibilities, yes, are crazy. I mean, yes, I mean, who knows आगे क्या किस venture में हम लोग shift करते हैं, but then obviously yes, with this task because it's completely untapped, there are a lot of opportunities that open up, right? To go into like the more traditional spaces. और जब तक तुम लोगों का ये decision होगा, hopefully you guys are doing well and around and सब कुछ, उस वक्त तक तुम लोगों की वो कस्टमर बेस और गुडविल और वो सब कुछ बन गई होगी कि पीपल आर लाइक हाँ ब्रो अभी से तो हमारे बड़े अरसे से ताल्लुकात हैं तो हम इन्हीं से ले लेते हैं. You know, बाकी I don't want to take a bank's name. चलो अच्छा, किसी बैंक का तो कार्ड चलता ही नहीं, एटीएम हमेशा डाउन होता है, इस तरह के मसले तो आप होंगे मुल्क में सबसे बड़े. But you know, if the it only takes like a few bad experiences दिल खराब होने के लिए ना. And if you guys are sorting that shit out, that stuff out, तो you know, I'm sure there's a lot of potential there. How do you, so let's do like a full flashback then. Yeah. How do you find yourself in Abhi? Where is this तुम्हारा ख्वाब था हमेशा से कि मैं बड़े होकर fintech में काम करूँगा, marketing में हो? Yeah, I'm looking at marketing, yes. So is that always the Hassan story? No, I don't think so. Like, I think you just keep sorting life. अच्छा. Right? जैसे आई थिंक उमर से भी बात हो रही थी, राइट? ही सेड लाइक दिस हाउस एक्चुअली जस्ट केम इन द पिक्चर एंड इट वाज परफेक्ट. सो मेरी कुछ फिलॉसफी कह लें या एनालॉजी कह लें लाइफ के बारे में, वो कुछ ऐसी सी है, राइट? सो देयर इज लाइक somebody actually question like, do you choose the path or the path chooses you, right? And I think it's not one of the either, it's basically both. ठीक है? So इंसान की जिंदगी जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है जैसे यूर अ सीड, बट जिस तरह ट्री नीचे से ऊपर जाता है, इंसान की जिंदगी ऊपर से नीचे जाती है, राइट? सो यू आर व्हेन यू आर बोर्न यू आर बेसिकली इमेजिन योरसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, राइट? यू हैव मल्टीपल, सो हर ब्रांच एक yes or no. So in life you just are it's a question of yes or no. You calling me to this podcast was either yes or no, right? And then imagine them as a branch, so yeah, and then the small other branch that they're leading to. So yes, एक जगह अलग जगह लेके जा रहे हैं, no एक अलग जगह लेके जा रहे हैं, but life keeps going on, and then you keep choosing yes and no's and yes and no's, and then you come down when as you're getting old, these opportunities start shrinking, and then they shrink, they become a trunk, and then you go in the ground, and then you die, right? So I mean essentially that's the end, and that's where we have to be, right? So zindagi mere liye isi tarike se, right? So I was the part of the process, somewhere the opportunity came in. So it's a mix of both, right? So Abhi was never a plan. Abhi was presented as an opportunity by a very dear colleague,
And then I decided to jump on the wagon, and I mean, this is where If you don't mind my asking, how old are you? I'm 29. Acha. Yeah. So you started work 7 years ago? Yes, 8 years 7 ago? years, 7-8 years. जब तुमने शुरू किया था, was the startup scene happening? Because I left Pakistan No, like in Ji, no 2010. way. So this is one thing I think I was blessed with, हाँ, coming into the startup space very early on. No intentions of getting involved. हाँ, जब मैंने career start किया था, I was working when I was studying. So सही. I was doing nights and then study in the What were morning. you studying? What were you working? I was working in IBEX, TRG, right? Okay. Yeah. So वहाँ पे एक international campaign थी Square Trade के नाम से. I Okay. joined that. Okay. And I was studying at Ikra University, doing my BBA, because that's the only thing I could afford, to be honest, right? Why were you doing your BBA? Because again, so I come from a business family, right? Okay. And I'm a Maiman, so Okay. we Shout are out very Maimans. prone to so we're prone to doing businesses only. Yeah. We're not educated into doing jobs. हाँ, ठीक है? let's stop the whole thing. ऐसा क्यों है? मुझे नहीं Yeah, पता. so it's basically the culture, right? हाँ, So आप एक फार्मर के बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गाड़ी बनाना शुरू कर देगा. right. So it's the culture, the whole family, the whole khandan is हाँ. actually in that The culture where community you're cultivating business- businessmen हाँ. since they're born. हाँ. आप बड़े होते हैं, आपको कोई जॉब की बात नहीं सुनाई देती. So again, the business family, we came down. I mean, काफी loss वगैरह हुए अबू के, and then I am the eldest son. So I had no clue where do I start, because for businesses you're essentially you need money to start off. And मुझे CV बनाना तक नहीं आती थी. Sure. Right? That was the time when I was, I think, 18 or 19, right. when I was struggling on how to make CV. Yeah. Because again, never thought I would wanna What or school were do you a in? job. I studied in Karachi Cambridge School. Right, okay. Yeah. So वहाँ पे education हुई. I did my O levels, but then the halat went off, and then I had to switch to intermediate. सही. Again, all those ख्वाब going down, and जिंदगी खत्म हो रही है. हाँ, जिंदगी खत्म हो गई है, पता ही नहीं करना क्या है, right? And then हाँ. you start finding reason or purpose of what's happening with your life. And फिर ये 2 साल बस जो intermediate के थे उसमें basically privately करके आपने sort out किया कि करना क्या है जिंदगी में और हो क्या रहा है. And then you realize, okay, this business is not an option anymore. You just have to. Capital नहीं है. Yeah, exactly. Capital नहीं है. There's no support from your अब्बा का father, business etc. खत्म हो गया? Exactly. Yeah. अब्बा का business खत्म हो गया. Exactly. Yeah. अच्छा, So it's gone. okay. So basically we So were you in can't even, construction. like- It's basically अच्छा. real estate business था. Sure. Obviously these crises came in 2006 and 7 and 8. जहाँ अच्छा, पे उस काफी लोग ज़माने के में. exactly. हाँ. That's where we went down, and then Right. there was no money, हाँ. and then we had I don't no know, clue. kids, if you're watching 2008 का ज़माना ज़रा scary था. Scary था, yeah. पता नहीं So- आपको याद हो ना. And then followed by the global recession again in 2012, 11ish, its duration. It was like a very tough patch for Pakistan itself. Yeah. So बस उसी दौर में basically, I'm trying to understand how or what do you do to live, and how do you make a living. सही. That's where I discovered that one of my friend told me that you can actually work a job while you study. Call center. Yeah, easy. Because उनके night hours तो वैसे भी होते हैं. Exactly, right? So to But get that's a lot of पढ़ाई, effort. Yeah. That was very rough patch of my life. Yeah. So जब आप पढ़ाई भी again पढ़ना क्या है और कहाँ पढ़ना है ये तक जो है थोड़ा सा struggle कर रहे होते हैं, because you don't have a mentor, right? And then the term was alien for me. I didn't even know what mentor is. Right. So आपने कहा कि जी अब किसी यूनिवर्सिटी में घुस जाएं जहाँ पे आप पढ़ सकें ताकि आपको जॉब मिल जाए, और पढ़ना क्या है वो जो आपको फिर आपने एक्सप्लोर किया. अब डेफिनेटली गूगल करा चीज़ों को, गूगल आ गया था थैंक्स टू गूगल. I was there back then. Shout out. और वहाँ से स्टार्ट किया आपने जी, ओके ठीक है ये करते हैं. बट देन फिर आपने देखा बजट क्या है. बजट तो यार I think the most affordable university in Pakistan was Ikra for me. Yeah. So I was like, okay, this is the goal. Let's just jump in and then let's see where we land. So I got in and then I started studying. But then again, fees देने के लिए you're thinking about, okay जी पैसे कहाँ से लाने हैं. So you have this tension कि आपने करना क्या, and that's where you find, let's say, this job. Sure. And it was paying well. So I think It does IBEX pay अभी well. भी बहुत अच्छा पैसे दे रहा होता है students को. So working nights, studying days, and then I did my BBA. उसके बाद then I shifted into a day job full time, and then started my journey. फिर मैंने basically I started off from the bottom, right? Literally marketing schools में जो पढ़ाते हैं, that's not the marketing that we actually end up practicing. So you have to kind of
get your hands dirty. You have to do everything. Right. So from there, I started off with How was your Ikra experience? Ikra was I think it was good. Sure. Yeah, I mean, so these institutions, they don't teach you what you're expecting. Acha. So it's basically the experience or the connections that you make are actually worth it, मेरे हिसाब से, right? So आपने पढ़ना खुद पड़ता है. These books in your hand will not suddenly go in your head. Right. You'll have to research. Right. And believe me, there's this book that your instructor is teaching you. इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ इंटरनेट पे पढ़ी हुई है. Right? All you have to do is make some effort and go into it. So अगर आपको consumer behavior के बारे में कोई पढ़ा रहा है, then that book is not the most ideal thing. Being students, we think, okay, these books, this is the Bible now, this is where everything is. No, that's not the case. You have to go research for the best person who's teaching you out there, and bests, multiple. Learn from them. That's where you actually learn. Is that what you did? Yeah, exactly. So this institution was a platform where I met people who opened up my mind into again thinking on how marketing works, because that was not my intention to be a marketeer, to be honest. If you ask, I think I wanted to be a mechanical engineer. I love cars. So I think that's why. I mean, when you're a kid, you just think like that, right? Mujhe space mein jana hai, to mujhe aeronautical engineer banna hai. So again, started off with that. Ikra experience was good. Learned a lot of things. Explored a lot of things. But didn't get enough. I think इकरा में एक जो मेरा ख्याल है खासा मसला ये है कि हर तरीके के आपको individuals मिलते हैं, right? So as a university is not perceived as the most premium, and that's where you don't get easily in the door for the companies or organizations that you want to work in, right? It's very hard for you to justify कि आप you're something better or different, right? अब तो IBS नहीं चांस ही नहीं देता भाई कि बंदा बात ही नहीं करनी ना, right? I don't want to call. So there are companies जहाँ पे कहते हैं जी इकरा के individuals या IB only हो जाते हैं, right? Yeah. Which is completely fine. I don't have hatred for any. I mean, they have their own reasons probably. But then उस चांस को निकालना आपके ऊपर होता है, वो कैसे निकालना है आपने, right? And sometimes obviously there's a bigger power up there that supports you, so things just fall into place. And then again working, learning, and then I came up with this opportunity jahan pe mujhe ek startup Pakistan mein with 4 Pakistani American kids, kids as in students who just came out of the university, graduate हुए थे fresh बिल्कुल, उनको हर prize एक कह लें competition होता है for startups, they get awarded, the winner gets awarded $1 million, right? Or it's a global competition, it's not just one city or one country, so it's something meaningful. And then these guys came in with the idea of carpooling in Pakistan, and they were awarded money for that. So अब ये job मेरे पास आई, and then me just trying to sort out. What year is this? This is I think 2017ish, 18. Achha. Yeah. So इस time पे, now that I'm actually just standing up, barely कि यार हाँ job हो गई है, पैसे आ रहे हैं, you're settled, and then this startup job comes in and you're like, okay, wow, do you want to jump into this? What is this startup? So risk है. Startup का तो कुछ पता ही नहीं था, like I didn't know the word startup, because उस जमाने में पाकिस्तान में तो कुछ सीन ही नहीं था. So like you said कि पता ही नहीं था, तो यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं पता था. In fact मैं जिन लोगों से पूछ रहा था अच्छे खासे जो जॉब भी कर रहे होते थे, या जो मार्केट में या इंडस्ट्री में होते थे, उनको बोले स्टार्टअप, देयर लाइक यार आई वुड रादर प्रेफर यू गो इनटू अ मल्टीनेशनल वर्सेस अ स्टार्टअप. व्हाट इज स्टार्टअप, राइट? क्योंकि उस वक्त आई थिंक फंडिंग भी हमने कुछ पूरे मुल्क में कुछ आई थिंक 2 डिजिट था शायद, मेरा ख्याल है, नॉट इवन 3 डिजिट. So बस उस वक्त फिर मैंने I don't know what happened, and then decision was made कि I'm just gonna jump on this, because I think it was exciting. It had more room for learning and opportunity, and I had more power and control of what I want to do. So what were you doing there? So I joined as assistant marketing manager, reporting to the co-founder. So I was the second employee in that startup. Why were you not the marketing manager? I mean, there was no marketing manager. Yeah, exactly. It's just with startups, designations are actually I think it's a thappa. When you're especially when you're starting off, it's just आपको CMO बनना है, आप CMO बन जाए. Nobody cares. So yeah, that's where I started my startup journey, and I think that was the job where I got the most amount of learning, because startups have a culture of I think hustle, ठीक है? Yeah. Which is tiring, agreed. But उसकी वजह से I kind of exceeded my own
capabilities, where I explored multiple things at multiple fronts and got a chance to practice a lot of things, and crazy amount of learning, right? That's where a person who's hungry for learning gets addicted to the culture. Versus jobs I was doing previously, मेरा ख्याल है जो एक साल में मैं काम करता था वहाँ एक महीने में कर देता था, right? There's a big Because difference. exactly, so it's quick execution. Pace अलग है. Exactly, pace ही अलग है. हाँ. And then unfortunately COVID happened, and we couldn't raise our Series A round. Okay? So that closed down in COVID, and it was a very tough situation again, where you were losing your job, knowing कि आगे कोई job भी पता नहीं देगा, COVID सब बंद हो रहा है. Yeah. And then I find this new health tech startup. I mean, just right in time. Right. They were our clients, and they decided to pick me up. Achha. Yeah, so I went there, and COVID हो रहा है और health tech की opportunity आ गई. Imagine the odds. So basically, Doctors नाम का startup है. What they're Doctors. doing. Doctors, yes. Oh yeah, I think Khizra was also involved. Yeah. So that's where I met Khizra, right? अच्छा. Yeah. So this was where I meet Khizra, and Doctors में यहाँ पे हम लोग underprivileged areas में उन doctors को connect करते थे जो घर पे इस वक्त काम नहीं कर रही हैं, underutilized है, right? So there's a huge population of Pakistani women that get into MBBS on scholarships, government funded, and they end up not practicing after they get married or religious constraints, ठीक है? Which is a huge and major national loss, जो इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा होता था. So यहाँ पे they were trying to tap these women and creating an environment जहाँ पे वो ये practice भी कर सकें comfortably, और उस जगह पे करें जहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा कोई, तो रिमोटली. फिर हमने बड़ा एक अच्छा सा नेटवर्क बनाया था जहाँ पे एक कह लें कि वहीं मोहल्ले की कोई खातून होती थी जिनको टैब वगैरह ट्रेन कर देते थे यूज़ कैसे करना है, एंड शी वुड हैव OTC मेड्स वगैरह, एंड देन ओवर द एयर उनके साथ कंसल्टेशन कर लेते थे लोग, और उनको मेडिसिन सब्सक्राइब करके वो आप वहाँ पे सारा सर्व कर रहे हैं, राइट? एंड ऑब्वियसली यहाँ पे फिर बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए हुए थे, यूनिलीवर, एंग्रो वगैरह, दे वर सपोर्टिंग द कॉज. एंड इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं वहाँ, जहाँ जिन जगहों पे रिमोट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन जगहों पे दे वर एक्चुअली गिविंग अस एक्सेस. तो बहुत अच्छा एक नेटवर्क स्प्रेड हुआ था. एंड कोविड में व्हेन देयर वाज द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल वर गोइंग क्रेजी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड थी, उस ज़माने में बहुत अच्छा काम हुआ. अगेन द लर्निंग पार्ट, राइट? द लर्निंग कर्व इज क्रेजी. And again, you're in marketing. Yeah, I was still in marketing. I was again assistant manager to manager marketing now. And उसके बाद फिर basically Abhi came into the picture. We were, I think, post-COVID 2021 में फिर लोगों, not the post-COVID, I think vaccinations ईजाद हुई थी उस ज़माने में, right? हमने fresh vaccination लगाई थी वहाँ पे, मुझे याद आ रहा है. So yeah, Abhi came into the COVID part, but वो end हो रहा था, and then this is where we were stabilizing, economies were struggling, but then again coming back, and Abhi came into the play. So yeah, that's. And you said employee number 5. Yeah, exactly. So I joined in June, became the head of marketing in September, and recently I got a second department as well called customer success. Okay. So I'm head of marketing and customer success at Abhi. So pura initial layout from the start for marketing and the brand building, etc., was a small team. Yeah. Was this something you felt comfortable doing going into it? Yeah, absolutely. I mean, I was up for the challenge. Again, वही बात कि यार आपको जो initial stage पे startups में learning मिलती है, that's completely crazy. Yeah. I mean, crazy amount of hours that you have to put. Yeah. Amount of anxiety and stress that you have to take is crazy. But उसका जो outcome होता है, you completely see yourself as a different person. Right. So एक साल में, again, look at Abhi from nothing to almost a very good brand in Pakistan, and doing substantial amount of impact work. And you guys are working across the country? Across the country and across the region now. Achha. So we have, yes, we're expanding into Dubai. We got into one of the most prestigious accelerator program, Hub 71 के नाम से. Right. It's basically a Mubadala group. It's a big group. They actually have this accelerator program. वहाँ पे Abhi got selected, and that's where we kicked off. Achha. And now I think we recently signed off one client as well. So we're doing a small pilot with a size number of employees in Dubai, and then Bangladesh expansion is also happening. Achha. Yeah. Achha. What is the overall fintech जो space है, because पाकिस्तान में
a lot of people are unbanked because पाकिस्तान में महंगाई is a persistent issue. कभी बहुत ज़्यादा कभी थोड़ी कम बढ़ रही है consistently मेरी सारी ज़िंदगी में. तो it seems, and also even for people who are not, या तो हम कहें कि these are not upper class problems ना, financial वो बर्गरों के मसले नहीं, उनके भी लेकिन अलग मसले हैं with like banking services, transactions online वगैरह. What is the क्या कह सकते हैं इसमें, overall what is the general sentiment, like are banks, are fintech companies around, because there's also Sada Pay, Safe Pay, there's you guys, I'm sure there's others. So is the idea, whether spoken या unspoken, कि भाई ये बैंक्स तो नहीं कर रहे ये मसले हल, so either because they're too big तो speed slow हो गई है, या maybe they're so big कि this is not like a worthwhile thing for them to spend time on and therefore money on. तो are these the sort of opportunities के तुम लोगों ने दिमाग में ले लिया कि बस हम ही करेंगे ये हल? Is that part of the perspective? Yeah, I think that is right. और आप जो जैसे दूसरे फिनटेक प्लेयर्स का नाम ले रहे थे, right? Everybody I think has picked a certain area that they're doing or working in, right? And then we respect that. I think Sada Pay is one of our clients, right? They're using EWA. अच्छा. Yeah. So, and I think plenty of us use Sada Pay as well. So, it's an ecosystem again. हम banks भी use कर रहे हैं, हम Sada Pay भी use कर रहे हैं, हम अभी भी use कर रहे हैं. So these are the essentials that we were deprived of. Right. Yeah, and then they came into the picture, and that's why we're enjoying them. Right. And this should be the case. आगे जाते हुए भी, we have to eco-exist. We cannot exist alone. Right. Every other player is supporting every other player. If you look at that. Is the relationship with the banks positive, or is there a relationship with the banks? Yeah. So देखिए ना, हमारी affiliation, we're one of the few companies that is partnered with OneLink. Achha. So OneLink is actually what's integrated. What is OneLink? OneLink is basically a network जो सारे banks को connect करता है, right? So thankfully आप कहीं ATM पे जाते हैं और अपना ATM कार्ड डालते हैं और वहाँ से आपको पैसे मिल जाते हैं. It's basically OneLink reporting to these banks. Basically Faisal Bank का कार्ड आपने HBL में डाल दिया, HBL का Habib में डाल दिया. So reconcile करने में मदद करता है. Imagine there are countries जहाँ पे इस तरह का कोई system नहीं है and they struggle. Right. So thanks to OneLink that we have this system, and what happens is कि we just have to deal with OneLink. OneLink disseminates the money to all the fintech or banks or vendors that exist. Naya Pay, Sada Pay, Easy Paisa, all the banks, SBL, UBL. Is OneLink must be a private company, no? Yeah, this is a private company. And this is basically the switch, right? This is the national switch. This connects every other finance, microfinance, bank, etc. What I'm thinking is कि so it's a monopoly of sorts, because OneLink का competitor कौन है? कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं. Like दूर तक कोई नहीं है. So I think Rast जो initiative लिया था State Bank. But Rast is government. Yeah, that's government. वो State Bank initiative था. But I don't know where it's gone now. I mean वो शुरू में बहुत marketing हुई, एकदम से वो गायब हो गया. But it was a very good initiative. I think it's still perhaps functional. जिक्र इतना नहीं हो रहा. हाँ, exactly, right. वो functional तो है, but जिक्र नहीं हो रहा. Perhaps also because वो शायद पिछली गवर्नमेंट ने ज़्यादा किया था, तो ये वाली गवर्नमेंट शायद इतना फोकस ना चाहे. Maybe, no idea. पता नहीं किसी बैंक में मैं गया था तो लगा हुआ तो था. Exactly. It was a mandatory thing for banks to talk about was Rast. So I think it was a good initiative, but I think OneLink का as an alternative तो नहीं बन रहा. OneLink is more internal. Yeah, exactly. हाँ. अच्छा. तो OneLink पे you guys are, why you registered? Because yes, we had to deal with multiple bank accounts, right? So imagine a person is having a bank account and right. हमें उसको सैलरी भेजनी है. So we cannot, let's say, have bank accounts in all the banks, possibly in microfinance banks, पता नहीं कितने multiple हैं, to disseminate that cash, right? So OneLink does that for us. Yeah. And how has the dealing, because yes, fintech startup scene especially, State Bank और उनकी regulations और SECP और इन सब के लिए, जैसे लोगों के लिए नया था, पाकिस्तान के लिए उनके लिए भी नया ही था. They had to come up with new rules, regulations, perspectives, and notoriously, conservative approach अक्सर होती भी है in financial institution में कि they're like, bro, हमें नहीं पता क्या है इसको, हमने तो देखा ही नहीं कभी पहले. तो has that over the years, अब 2017 से जब इंटरनेट वापस पाकिस्तान में खुला है, 2017 में इसमें YouTube
वापस पॉपुलर होना शुरू हुआ था. तो उस जमाने से I feel like they've opened up to the idea of fintechs. Exactly. I mean, very supportive. Again, we could not have done this without the support. You actually obviously. could not have done exactly, that. right? It wouldn't have been possible. So, definitely बहुत supportive रहे throughout. In fact, हमें जो वही NBFC license जो भी मिला SECP से, so the process was very supportive. Again, it was a new thing, but you know, काफी अच्छा experience रहा हमारा overall. Any future Abhi initiatives that you can talk about this stage? Yeah. So देखें अभी what we want to come out with now. This is a financial empowerment. We want to go towards financial wellness and financial independence. अच्छा. Right. इन तीनों टर्म्स की जब बात करते हैं लोग काफ़ी इसको मिक्स एंड मैच कर देते हैं. फाइनेंशियल वेलनेस is I think a bigger umbrella, and then financial independence and empowerment is kind of part of that. Right. ठीक है. Independence, financial independence is basically where I don't have to worry about money. Right. Okay? When I have maybe sources of income, or maybe I'm storing the way it should be. Okay? Financial empowerment is where I have hold of how I can use my money, or better ways on how I can access the money which I actually have earned. So earned wage access comes under financial empowerment, and these both are basically आपको financial wellness provide कर रहे होते हैं. So financial independence is where we're working on right now. Pakistani rupee unfortunately depreciates every day almost now. Yeah. So it's a worrisome thing for an individual who's Does that actually affect aware. you guys? For us, no, but for Pakistan, definitely, right? आप और मैं भी शायद अफेक्ट हो रहे हैं. वी आर नॉट रियलाइजिंग. अगर हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, देन वी आर गेटिंग अफेक्टेड. अगर हमने कमिटीज, मैं तो पता है मैं फॉरेन डॉलर्स तो मुझे तो मैं कर रहा हूँ ये सारे मसले. आई एम कॉजिंग दीस प्रॉब्लम्स. बट नहीं, हाँ, इवन ओवर हियर एवरीबॉडी आई नो हियर वही डे बाय डे आपने अगर पैसे बचा भी लिए या कमा भी लिए, दैट मनी इज वर्थ लेस. एग्जैक्टली. सो आई मीन देखिए ना, अगर मेरे पास 40 रुपए पड़े हुए थे जनवरी में 2022, ठीक है, और दिसंबर 2022 में वो 40 रुपए से आधी डबल रोटी मिलेगी, और शुरू में वो पहली मिल रही थी. सो दिस इज हाउ वी आर डेप्रिशिएटिंग. एग्जाम्पल बड़ी अच्छी सी मैंने चैट जीपीटी पे लिखा कि यार मुझे बताएं. चैट जीपीटी ने मुझे बताया. मैंने कहा 5 year एक्सप्लेन अ 5 year old ऑन हाउ रुपी डेप्रिशिएट एवरी डे. उसने मुझे बताया कि यार अगर आप एक कैंडी लेते हैं, ठीक है, एंड देन नॉट ईट इट राइट देयर एंड देन कीप इट फॉर अ वीक, एंड देन एक हफ्ते बाद वो क्या वैसा ही टेस्ट करेगा? नो, it's not that good. You don't want to eat it. So this is how money is depreciating, or rupee depletes. So इस एग्जाम्पल के साथ what we wanted not to do was making people store their money in, let's say, just rupees, ठीक है, और भी उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करें, कहीं सेव ऐसे करेंगे जी उनका डिप्रिशिएट ना हो रहा. और लोग कहते हैं जी कमेटीज डाल दें, ठीक है. कमेटीज, अब आप सोचें कि एक बंदा जो 20-20 हज़ार रुपये जनवरी से दिसंबर तक दे रहा हो 12 महीने, राइट, और वो जब उसको विड्रॉ करेगा 2,40,000, वो उसके शायद 33% डिप्रिशिएट हो चुके होंगे इफ ही वाज अगेन hedging against वही सेम अमाउंट ऑफ मनी अगेंस्ट गोल्ड. तो उसको तकरीबन 33% का लॉस हुआ है. सो ये लॉस सब एक नॉर्मल बंदे को आप कैसे समझाएंगे कि भाईजान दिस इज नॉट हेल्दी फॉर यू. यू कुड हैव सेव्ड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन गोल्ड एंड made a lot of money. देखें यार, और कमिटीज जो डाल रहे हैं ना, आप पैसे ना जमा करें, आप सोना जमा करें. Exactly. I mean, so इसीलिए देखें, इसीलिए हमने करा ये कि ARY के साथ we're partnering now. Oh wow. And it's launching just FYI inshallah soon. Where you can buy gold off of your earned salary. Amazing. So आपको वेट नहीं करना सैलरी आएगी, गोल्ड खरीदूंगा, जाके नहीं खरीदना दुकान पे, बट डर लग रहा होता है भाई, हालात ऐसे हैं आजकल, तो आपको पता है. अच्छा, तो फिर so you don't have to go physically in, you just pay ARY, get the gold, आपके virtual account में वो visible होगा. And then if you feel comfortable, you want to go and get the physical form of it, आप जाएं, उनको बोलें यार मुझे physically ये मेरा account है, इसमें इतना बैलेंस है, आप मुझे फिजिकली दे दें. They give you that. And then you bring it home. Whatever. अगर आपने नहीं रखना, आपने virtually रखना, आप maintain करें उसको. So it's sort of like a very physical fixed deposit account sort of thing. Kind of, but in gold, right? मतलब लोग वैसे ही काम कर रहे हैं. आप देखें, अगर जिसने गोल्ड में स्टोर करना है अपना पैसा, वो जाके गोल्ड खरीदता है और उसको फिर बेसिकली अपने घर पे लाके रख देता है. या लॉकर में. Exactly. But अब हम कर क्या रहे हैं कि हम उसको ये कह रहे हैं कि जी अब आपको एक तो जाने की जरूरत नहीं है, दूसरा वेट नहीं करना. राइट. और तीसरा, उस बंदे को जिसके पास ये मीडियम शायद था ही नहीं सेविंग का दिमाग में अवेलेबल, उसको बताना कि भाई डोंट गो फॉर द पैसों को सेव कर लें, पैसों को सेव कर लें. पैसों को नहीं सेव करना, आपने गोल्ड को सेव कर लें. पैसा इज अनस्टेबल राइट नाउ. या हाँ, नहीं, obviously, and even the people who don't have
ये डे टू डे सेविंग टाइप इश्यूज Yeah. they want to park their money. पाकिस्तान में one thing I've seen is कि लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, which is a Yeah. very unique thing. पाकिस्तान में ये होता है, बाकी जगहों पे तो गाड़ियों की वैल्यू कम होती क्या है, हो गया? यहाँ तो बढ़ जाती है. यहाँ बढ़ गया. अच्छा, ये वैसे ग्लोबली थोड़ा सा हिट आया है, इसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा. हाँ हाँ ग्लोबली पैसे काफी बढ़ गए हैं गाड़ियों के, ठीक श्योर, है. वो सप्लाई हाँ, चेन की लेकिन वजह यहाँ पे से, जो उसकी वजह आप से. सही बात करें, यहाँ पे जो ये ऑन वाला चक्कर जो चला था और जो चलता रहता है, हाँ वो इसलिए हाँ चलता है क्योंकि लोग अगेन सब कूद जाते हैं ना. अगेन वी डोंट नो, वी डोंट हैव एजुकेशन ऑन हाउ वी कैन सेव मनी. या हमें दिखता है जी गाड़ी पे, मतलब एक गाड़ी आप ले रहे हैं 17 लाख रुपए की, इनवॉइस थी उसकी 15 लाख की, ठीक है. हाँ आपने ऑलरेडी 2 लाख दिए. हाँ क्योंकि मुझे पता है मुझसे भी कोई पागल आदमी खरीद लेगा इससे ज्यादा की, तो मैं आपसे 17.5 की खरीद लेता हूँ. या और फिर वो तीसरा बंदा ले रहा है 18 की, और ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, कोई यूज नहीं कर या रहा या गाड़ी, या ठीक है. हाँ वो जब एंड यूजर के पास जाती है तो 20 लाख की पहुंची, और वो हाँ एंड यूजर भी ले रहा है हाँ कि मैं इसको बेचूंगा, तब तक वो डॉलर और इसकी वजह से एग्जैक्टली पैसे ऊपर चले जाएंगे हाँ तो कवर हो जाएगा. हाँ. क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी रिवॉल्विंग इन तो कार्स. मुझे ये बताओ, there's also an education aspect, and we'll keep this as towards like the end of the episode. There's a lot of awareness के issues जो तुमने बार बार जिक्र किए कि लोगों को पता नहीं होता, लोगों को या एहसास नहीं होता. Even in our education या related lives, सही बात है. वही मैं पता नहीं किससे से बात कर रहा था, अपने अपने स्कूल के बॉय से ही बात कर रहा था जो हम 15-20 साल पहले स्कूल में थे. कुछ लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए, सही है. उनमें से भी some people had really straight paths या upwards, some people did not have so straight paths. कुछ लोगों के horrendous results आए और उनका कि ब्रो ये इसका तो सीन बैड है, या but they also कुछ किया, ये किया, हाथ पैर मार के they got into like trucking industry में कोई घुस गया और ये कर लिया, and things that we just had to figure out on our own. सही है. And this is पाकिस्तान के लिहाज से हम ये सब, even though this was like city school गुलशन, सब बहुत बर्गर कहलाएंगे क्योंकि ओ लेवल्स कर रहे हैं, एंड ओ लेवल्स इज बियॉन्ड द रीच ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ द सही कंट्री, बात है. और हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है, ठीक है. तो इस तरह अगर हम बात करें फॉर द वाइडर मेजॉरिटी, तो देयर इज़ अ गारंटी कि उनको तो ये फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल एजुकेशन और व्हाट टू डू, हाउ टू इन्वेस्ट, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, उनको तो पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता. सही एंड बात है. कोई बताने वाला भी नहीं है. तो there is a education, everything I've been linking recently to content creation. या कि bro अभी का YouTube चैनल जो है ना उसका फ्यूचर क्या है? Because like everyone अभी is a mobile app, right? Everyone's on their phone. या हर किसी के फोन पे टिकटॉक भी चल रहा है, हर किसी के फोन पे YouTube भी है. Data packages in Pakistan are cheap. Yep. So there is like and you're in marketing. Yep. Agreed. So there is a huge potential for you guys, जो तुम कह रहे थे हाँ. कि मैं मार्केटिंग किताब से पढ़ता हूँ, किताब से बेहतर ऑनलाइन है. Yep. lot of people aren't even studying, Yeah. but उनके पास इंटरनेट है. ऐसा ही है. So you guys could also be that, Abhi University. Yeah. So अब मैं इसका थोड़ा सा thank you for touching that topic. Yeah. So we have partnered with AKD Securities. Okay. And they are helping us create these videos. अच्छा. Micro savings, micro investments. So we have created these 2 topics जहाँ पे हम start करेंगे. होता क्या है कि एक नॉर्मल बंदा, अगेन यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में आपको नहीं सिखाया जाता ये. Yeah. I think a big education gap where reality and what they're teaching you. इसको सॉल्व करने के लिए हमने जब एक कह लें सर्वे किया, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर्स, दे हैव नो आइडिया ऑन हाउ दे कैन वर्क अराउंड दीज माइक्रो सेविंग्स और माइक्रो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं इस वक्त, हमें नहीं पता. So, where they have a full-fledged studio, they're helping us out. So it's a partnered, venture. They're going to be creating videos. We're going to be giving them topics, and they're going to be featured on our Abhi app. So जिस तरह आप एक स्टोरी देख रहे होते हैं, within your app. Yeah, within our Very app. good, very So good. again, जो आपने कहा कि हर किसी के हाथ में फोन है और उसके पास अभी ऐप भी है. Yeah. So हम उसको प्रमोट करेंगे कि जी अब आपको अगर लेट्स से ये पैसे तो निकाल रहे हो, क्या जानना चाहते हो कि इसको बचाने कैसे हैं और इन्वेस्ट कैसे करने हैं, तो आप वो वीडियो देख लें. And there will be very small clips. So वही bite size content चल रहा है. Sure. People don't have the reception of big content in terms of Yes. learning. Yes. वो अपने fans या अपने हमें बहुत एहसास है इस बात का. So वो people they love, they would watch for hours, but Sure. then when you're teaching them something, they just want to kind of swipe up, right? Yeah. So we were creating bite sized, and then again उसके फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके extended courses भी बनाए अगर वो we see a little charm in there. So yeah, we do want to educate people around this. Absolutely. क्योंकि I feel पाकिस्तान में there is this
education, एक तो वैसे ही not everybody gets educated. Many people, I don't know the majority, but many people just can't even afford to think about educating their children or themselves because like their life and finances don't have space for it. और जो होते भी हैं, the vast majority of it is ये पढ़ोगे ऐसे और ऐसे नंबर आएंगे तो नौकरी लग जाएगी. लर्निंग और अवेयरनेस और just ब्रॉडर ग्रोथ का तो टाइम ही नहीं है. टाइम ही नहीं है, सही तो बहुत सी बातें मिस हो जाती हैं. दैट पीपल दैट वही अब मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो बाहर जाके बस यही कहता रहता है ब्रो बाहर तो सब कुछ इतना आसान है पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा. एंड इट्स जस्ट दैट आई फील इन माई एक्सपीरियंस लिविंग अब्रॉड स्पेशली इन यूरोप लोगों का बचपन से ना जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिस्टम्स इन प्लेस अराउंड देम उनके लाइफ की ट्रजेक्टरी पैदा होते ही अलग होती है. राइट द डिसीजंस दे लाइक यू हैव टू थिंक अबाउट अच्छा मुझे शाम को पढ़ना है सुबह करना है. दिस इज नॉट अ थिंग इन यूरोप बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी फ्री है. ठीक है तो आप कर लेंगे आपको टेंशन ही नहीं है कि मैं तो अब्बा को प्लॉट बेचना पड़ेगा उधार लेने पड़ेंगे कि बेटा मास्टर्स कर ले. दैट्स जस्ट नॉट देयर. And therefore there's just so much information and awareness and stuff floating around जो कि चलो पाकिस्तान में नहीं है. But there are these workarounds. I feel there's a lot of opportunity. बस उसको monetize अगर करने का कोई तरीका मिल जाए ना तो education space में demand is I think काफ़ी unlimited. तो अगर companies को because companies want to make money, so companies can figure that out. बहुत से लोगों के बहुत से मसले might now because now that everyone has a phone as well. Speech देती है मैं बैठी हुई. खैर तो ठीक है. Is there anything else that you want to talk about before we wrap? Anything important? Any life lessons? कौम के लिए खिताब? 20 लोग तो देख रहे हैं. Yeah. Could be 20,000 man. So yeah, we never know the power of these podcasts. I think a lesson that I learned in my life, I think it's just being thankful and persistent. Okay. Right. बहुत दफ़ा एक चीज़ जो मैं कहता रहता हूँ जो मेरा भी शायद लेसन है और मैं इसको एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ जिसमें शायद दूसरों को भी कहूँगा कि sometimes when you're planning life you just think of things you need with money, right? You think of acquiring stuff. ठीक है आप अपनी लिमिट से सोच रहे होते हैं. आप कहते हैं यार मेरे पास 10 लाख रुपए आएंगे तो मैं ये करूँगा. ठीक है और ये चीज़ें चाहिए. ठीक है या फिर आप कहते हैं मुझे ये चीज़ें चाहिए तो मुझे इतने पैसे चाहिए. राइट वी गो फ्रॉम थिंग्स टू मनी versus money to things. Right. और पैसा जब होता है ना पैसा is something that flows to you at the right time and the right place, right? Okay. And when it comes it doesn't ask you कि मैं कितना हूँ. ठीक है and you don't know how much is gonna coming, right? So अगर आप देखें billionaires जितने भी हैं दुनिया में did they know they would be making billions? And it's a struggle when you have money coming in you don't know where to put it. So people rather thinking about what do they want, they can think about if I have let's say this much money coming in, this is how I'm gonna be planting it. And if I have let's say this amount coming in, this is how I'm gonna be distributing it. So जो distribution plans है ना वो हम नहीं बना रहे होते. हम लोग अपनी wish plan बना रहे होते हैं. So वो wishes are actually not related or controlled with your inflow. वो कभी भी ज़्यादा और कम हो सकता है. And this is where the disappointment or the depression comes in. मुझे चाहिए ये कम मिल रहा है और चाहिए ये ज़्यादा मिल रहा है. You go crazy. So that's why you need to have a plan in place on how you're going to be spending money that you'll be making in life. And everybody will come to a stage where they'll be making a lot of money. So you just need to be very, planned on how you're going to be investing. And similar, this goes around with products like Abhi. आपको नहीं पता होता कि जब आपको access मिलती है, again, if you have a wish list, you're going to be starting to waste that money. But if you know where or how you'd be investing that money or distributing it, it's a empowerment tool. Right. मतलब बजाय इसके कि आप luxuries और उनके plans बनाएं, you should also factor in investment. Exactly. So कभी हम सोचते हैं ना कि यार ये बंदा तो 1 करोड़ रुपए कमाता है तो ये तो इसके तो ये भी ले सकता है 1 महीने में एक गाड़ी ले सकता होगा. This is not how it works. Because nobody's life sorted out, right? Yeah. So you have to realistically think कि अगर तुम इतने पैसे कमा लोगे तो तुमने उसको लगाना किस तरीके से कहाँ लगाना है. Because everybody has a part in your money that you're making. Sure. Right? There's a lot of people that are connected with you and they all deserve that money. So you have to think very carefully on how this money is going to be distributed. It's a responsibility that's coming in your hand. तो तुम 30 साल के होने वाले हो. Are you gonna do your community proud and बस छोड़ के business start कर लो. अब तो तुम stable हो गए हो. So this is where I think ये बहुत
अलग सी बात है कि जहाँ पे आपको मीनिंग मिल रहा होता है ना, you feel better, right? So meaning, so zindagi is completely, if you look at it, is sometimes feel like, yaar मैं इस दुनिया में आया क्यों, right? What am I doing? Is it just to do XYZ that I'm doing? No. So you have to have a meaning in life. That's basically the driver of your own growth and yourself. So business start शायद जब करूँगा जब मुझे कोई अलग जगह पे बेहतर मीनिंग दिख रहा होगा और मुझे ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे मैं वो मीनिंग सर्व नहीं कर रहा. But I think Abhi is still a story that needs to be projected more and then go beyond. So I'm happy where I am making impact in lives, and I would want to help project that and expand on this and serve the bigger picture than starting my own thing right now. Because again, like I said, money will come at the right time. It will hunt you and then come to you directly. But this meaning जो मैं अभी serve कर रहा हूँ, this won't. Yeah. Do you have any Jinn stories? Jinn stories, man. That's an exciting topic. Yeah, I think I had a situation जहाँ पे अब कभी कभार when you recollect those memories, कभी लगता है शायद मैं बच्चा था और मैं पागल सा था, इस वजह से ऐसा लग रहा है. But then yeah, I think I have had. So now, is it personal? No, it's not personal. I think बचपन में खेल रहे होते हैं. तुम्हारे साथ हुआ था? Yeah. अच्छा. It happened with me. So I think twice, right? एक बहुत जब मैं बेसिकली एक बिल्डिंग में रहने गए हम लोग नियर नेशनल स्टेडियम, राइट. बिल्कुल उस वक्त 2001 की बात है ये, राइट. सो काफ़ी घर खाली होते थे उधर, राइट. वी वर अमंग्स द फर्स्ट 5 फैमिली शायद व्हिच एक्चुअली वेंट इनटू द बिल्डिंग. तो वहाँ ऑलमोस्ट कोई नहीं होता था, ठीक है. सो आई जस्ट हैड वन फ्रेंड, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिम इन द ग्राउंड. जी मगरिब का टाइम हुआ, सो माय मॉम से जी मगरिब पे आपने घर आना है, ठीक है ना. सो अजान हुई, वी वर लाइक ओके जी भागते हैं. एंड देन मैं बैटिंग कर रहा था, मैंने शॉट मारा, बॉल कहीं इधर उधर चली गई. उसने कहा अच्छा बॉल उसकी थी, बैट मेरा था. व्हेन यू आर किड यू जस्ट वांट टू होल्ड योर थिंग वेरी क्लोज टू योर हार्ट. तो वो कह रहा है यार मैं बॉल लेके आता हूँ, जाना मत, साथ जाएंगे. हम दोनों को डर लगता था. सो मैंने कहा जब ठीक है ये तो डर रहा है, ये अभी जाएगा. और फिर मैं चुपचाप ऊपर चला जाता हूँ. आई बिकेम लिटिल मिस्चीवियस. सो मैं जाने लगा ऊपर, एंड देन आई सॉ on the right side a door. Was there कुछ flats ऐसे थे जिनके doors खुले पड़े हुए, nobody's there. And then I saw a big red eye. What? Right there, yeah. It was crazy. And then I thought it's maybe my ऐसे ही दिमाग में कुछ सोच रहा हूँ मैं. But no man, I kept looking at it for like I think good 10 seconds, and it kind of moved. So उस दरवाजे के पीछे एक खिड़की भी थी जिस खिड़की से मुझे दिखना चाहिए था पीछे का, वो खिड़की के अंदर मुझे दिख नहीं रहा था. So I was like, okay, this is not transparent shit. This was huge. I'm talking about this big eye. And again, what was that? I have no clue. Wow. But then I got scared like shit, and I ran to home. Right. And वो दोस्त अभी तक वापस वो उस बेचारे को कुछ नहीं हुआ जिसको डराने का सोच रहा था, और मैं डर गया था. तो yeah, that was crazy. Wow. Yeah, that's excellent. चले हसन साहब, thank you very much for coming. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. आप मुझे भेजिएगा links in the description to whatever he sends me. I'm sure it's a lot of Abhi stuff. Yeah. But yeah, this is interesting, man. I'm glad I finally found koi fintech person who's in a company that also seems to be stable. And doing good work. ठीक है जी, thank you very much for watching. Hopefully everything's been recording. Thanks once again to Umair and Alif Studios. Hopefully यहाँ आपको 2-3 और episodes भी आ जाएंगे. Okay जी.